सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि हमने बैंक से बोरो की है विच इज़ P, इट इज़ 10,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि परसेंटेज में होता है, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास 7% पर एनम, एंड द टाइम फॉर दिस बोरोइंग इज़ 2 years, 2 साल के लिए हमने उसको बोरो किया है। अब मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट है तो हम कोई फार्मूला फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे, विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला। 1 साल के बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट पड़ेगा, तो 10,000, 7%, ऑब्वियसली 700। 1 साल के बाद 10,000 का 7%, दैट वुड बी सिंपल इंटरेस्ट। Now 10,000 rupees base, after second year the interest will be calculated on the basis of principal amount again। जो अमाउंट हमने बोरो की है उसी का दोबारा से हम निकालेंगे 7%। तो आफ्टर सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज अगेन 700, सो द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज 1400। टोटल अमाउंट ड्यू की उतनी भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये अमाउंट हमने बैंक को पे करनी होगी आफ्टर 2 years। Now let's see what will happen after first year. After first year, the amount is 10,000. 7% of 10,000 is again 700. So it means at the end of first year, the interest value is same whether we are using simple interest or compound interest. Now here the game changes. Now 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम ऐड करेंगे क्या, जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 10,000 रुपीज़ में ऐड करेंगे 700, सो द अमाउंट विद द बैंक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इज 10,700। अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन करने के लिए जो अमाउंट हम यूज़ करेंगे वो होगी 10,700। अब 10,700 पे कैलकुलेशन करेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 700 प्लस 749। दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years if we are calculating compound interest. So this is the main difference between compound interest and simple interest. Now let's do this question again. Formula. Now let's see what is the formula of simple interest and compound interest. वो क्या फार्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम वैल्यूज प्लग इन करके उनको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT over 100, where SI stands for simple interest, P का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे या बोरो करेंगे, R is rate of interest which is usually in percentage, T is time in years, and A is the total amount. Compound interest formula. This is the compound interest formula where capital A is total amount, P is principal amount, R is rate of interest, T is time, and CI is compound interest. चलिए अब यूज़ करते हैं फार्मूला। हमें फार्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PRT over 100. P is principal, R is rate, and T is time. And for the compound interest, the formula is what? Now for the compound interest, we don't have direct formula, so it means at the first place we will calculate the total amount,
and from the total amount we will subtract principal, then we will get the compound interest. So the formula for the compound interest is, first we will calculate the total amount, 1 plus r over 100 raised to the power n. इसमें n है हमारे पास number of years, r is rate, 1 and then p principal amount. Example is same, वही example लेते हैं. Principal amount हमारे पास है, principal amount is 10,000, using the same example but this time we are using the formula. Formula use करते हैं, rate भी वही है और time भी हमारे पास वही है, 2 years. Now let's apply the simple interest formula. Simple interest formula, the time is 2 years, the principal amount is 10,000. Substitute the values in this formula. P is 10,000, rate is 7 and time is 2 years divided by 100. So simple interest is 1400 rupees. And then finally we can have total amount, which is principal amount plus simple interest. So by adding these two we have 10,000 plus 1400, this is equals to 11,400. Now let's apply the formula on compound interest. Now in compound interest we will have amount at the first place. Principal amount is 10,000. 1 plus rate is still 7, but this time we are calculating compound interest. Time is 2 years. Now simplify this. We will have 1.07 raised to the power 2. Using your calculators, this is the total amount. Total amount is 11,449 rupees. Now in order to calculate the compound interest, so compound interest would be total amount minus principal amount. That is total amount, which is 11,449 minus principal amount. So the compound interest is 1449 rupees. This is how we calculate the two interests, simple and compound interest. But the only difference is that in simple interest we get the interest at the first place, then we will find the total amount due on us. Simple interest में पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करने के से हमारे पास टोटल अमाउंट मिलती है जो हमने बैंक को पे करेंगे एट द एंड ऑफ 2 years, विच इज़ ड्यू ऑन अस. और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास पहले टोटल अमाउंट निकलेगी और अगर हम इंटरेस्ट अलग से फाइंड करना चाहें तो टोटल अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. I hope that you have fully understood the concept of simple interest and compound interest and the difference in between them. Thanks for watching and think subscribing this channel. Bye bye.